You have already seen the paper, and I think in the drive we have added 2022 paper. We have not added 2023 paper. So, what was your analysis of 2022 paper? Any initial thoughts? सर 2022 का जो क्वेश्चन था सर उसमें और 2023 के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्वेश्चन के लेवल थोड़ा टफ कर दिए गए थे 23 में। बाकी 22 में जो थे फर्स्ट टाइम सीयूटी में जेएनयू आया था तो उस मामले में क्वेश्चन का लेवल जो था सर मॉडरेट था, मतलब ज्यादा टफ, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। तो और लेकिन 23 में थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आए थे जो जेएनयू में जो पहले आते थे 2019, 20, 21 में, जो 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन दिए गए थे। तो ड्यू में भी पहले ड्यू का जो एग्जाम होता था उसमें उस हिसाब से ड्यू भी 2023 में ऐड हुआ, उसके चलते स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या ज्यादा बढ़ी हुई है। True. Okay, let me ask you a simple question. किससे पूछा जाए? प्रतीक, am I audible? प्रतीक सुन नहीं पा रहे। कंचन, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग में से ऐसे कोई हैं जिनको बोलने में डर लग रहा है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। प्रतीक, am I audible? Yes, sir. Okay. This is a very basic question, which again we need to understand, and everyone should understand why I'm asking this question. This is a CUET examination for postgraduate courses, right? Yes, sir. Admitting to the postgraduate courses. Now, who do you think is going to shade the question paper? Teachers who are teaching at the undergrad level or teachers who are teaching at a postgrad level? Sir, postgraduate level. हाँ, तो जब पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर्स सेट करते हैं, एंड बिलीव मी, लेट्स सी दैट दे हैव बीन टीचिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट for the past, let's say, 10 years or 20 years. So, even though the topics that we have studied at an undergrad level, the understanding of those topics for a professor who have been teaching for the last 20 years is quite different, right? ऐसा हो. So that's why, even with simpler topics, we should expect that the questions difficulty level will increase. Okay. Yes, sir. Yes, sir. One of the basic mistakes, and again, this is something that we discussed with lot many number of students. उनको लगता है ना, जो पास स्टूडेंट्स हैं, मतलब सबके मन में यही रहता है कि जो अंडरग्रेड के टीचर्स हैं वो हम लोगों को पढ़ाए हैं, तो क्या उनके लेवल से जो हम लोगों ने अंडरग्रेड लेवल में पढ़ा है उस लेवल से हम लोगों का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा. And one of the basic, you can say, the gap is in terms of understanding. तो ये चीज सबको क्लियर हो गया, तो क्यों डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है इवन विद द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड एट अंडरग्रेड लेवल, इज जस्ट बिकॉज द प्रोफेसर्स हु आर सेटिंग अप द क्वेश्चन पेपर. सो इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगी. Second thing, how many of you have looked at the cutoff of JNU for 2022? Yes, Rahul. So what was the cutoff? General cutoff. Let's first discuss the general cutoff for 2022. I think out of 300, 278 was the cutoff. Yes, it was 92%, 92%. Yeah. और second cutoff आई ही नहीं. Yes, sir. I have watched your video on the analysis of previous year cutoffs. But then, if you look at 2023 paper, one of the things that we saw was the cutoff decreased for JNU. Not just because the competition has decreased or the students are not preparing, yes, which Rahul clearly mentioned that the difficulty level has increased. The next thing which also happened is in terms of timeline that the students get to prepare for the entrance examination. 2022 का पेपर आपका कब हुआ था? Any idea? सितंबर, अगस्त या सितंबर के बीच अगस्त में हुआ था. Yes, sir. This year paper was conducted in the month of June. Okay, so they were most of the students, undergrad students, they already had their semester examination, so वो preparation का time नहीं मिलता है.
तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है, एंड वी थिंक दैट नो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा एंगेज कर गया इसलिए कट ऑफ डिक्रीज हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इस साल का अब एग्जाम मार्च में होने वाला है, सो वी हैव रफली अराउंड 5 months टू प्रिपेयर, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन। ओके, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी के मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो यू मे शूट नाउ। किसी के पास कुछ क्वेश्चन नहीं है? हाँ, किसी की? क्वेश्चन यस राहुल, प्लीज आस्क। सर, मैंने जो क्वेश्चन देखा, मतलब जेएनयू का क्वेश्चन भी देखा 19, 20, 21, और सीयूटी का क्वेश्चन देखा 2022, 23। उस क्वेश्चन में मैंने एक चीज समझा कि जो भी क्वेश्चन जो सेट किए गए हैं उसमें हमें जेएनयू के जो पीजी का सिलेबस है, एक रफ आइडिया उसको भी लेना पड़ेगा सर। हम्म, जो जेएनयू का जो कोर जो क्लासेस ले लगती हैं जेएनयू में, जो एडमिशन लेने के बाद उस सिलेबस का भी रफ आइडिया लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अब जेएनयू की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेएनयू के क्वेश्चन पेपर वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोफेसर सेट कर रहे हैं। तो अगर हम अंडर ग्रेड के लेवल से सोचें तो शायद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन एक स्टेप ऊपर जाके अगर हम ये सोचते हैं कि इसमें किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो सकती है, एंड द ओनली वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड द चेंज इज गोइंग थ्रू द पास्ट पेपर्स। सो वो सारा चीज आज की इस लेक्चर में ना हम लोग ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सर। प्रतीक, यू हैड ए क्वेश्चन? यस सर। सर इस बार का जो सीयूटी का जो पेपर था उसमें सर बहुत सारे टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस से आए थे, नेट लेवल के आए थे, सर उसको कैसे टेकल किया जाए? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, लेकिन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ सिलेबस जो है कितना हो सकता है और विद इन सिलेबस कितना हो सकता है। तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिस्कशन दैट आई एम गोइंग टू कम टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन। ओके, सो दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस सर। Okay, so we have examination in the month of March, right? And they have not declared the date. So right now we have starting with October. So we are going to complete the classes by January. Okay. Now in this 4 months, the time that we have two parts to cover: Part A, Part B. So just to let you know, those who of you don't know, so in Part B will consist of 75 questions with 300 marks. Part A will consist of 25 questions of 100 marks. So total CUT paper will be of 400 marks. Okay. All universities like Delhi University, BHU, HCU, okay, Pondicherry University and other central universities going to rank students for admission on the basis of 400 marks. Okay. We have only JNU who is going to consider this 300 marks. Only JNU. Okay. So one of the mistakes that we saw students made in 2023 was they focused too much on part B and did not focus on part A. So what happened? Anyone, let's say, who scored out of this 100, someone who scored 75 marks in part A and even 50%, so 150 marks. So total, what is the score? 225. And this person got Delhi School of Economics. And someone who scored 200 marks out of 300, but let's say did not score or did not even attempt part A, तो इनको ना जेएनयू मिला, नहीं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिला. So this was the first mistake that we saw students committing. Everyone clear with this?
Yes, sir. Okay. So we are not going to make this mistake for the 2024 examination. So what we are going to do is that our 75% time will be on part B and 25% time should be devoted to part A also. We are not saying that this will be in terms of classes. Our classes will be like 90% for part B and 10% for part A. But when you are going to prepare, make sure that the question bank, the test series, the classes that we provide for part A, you also give sufficient time to part A, because part A is relatively easy to cover and part A is relatively easy to score. Okay. You might think that, okay, JNU is my first choice. And we also prefer JNU as a first choice. But then in terms of Delhi University and JNU, do you know what is the difference in terms of Delhi University and JNU? Can you tell me? You'll find out that number of seats at Delhi School of Economics is lower than that of JNU. But then why do we dismiss the competition level in for Delhi University is much higher as compared to JNU? But then why do we prefer JNU as the first choice? Why would someone, let's ask from uh, Rahul, would you prefer JNU as compared to Delhi School of Economics? सर कंपैरेटिवली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी के मामले में जेएनयू से काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पे पहली बार सोशियोलॉजी इंडिया में सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ मतलब एस्टेब्लिशमेंट सोशियोलॉजी के लिए पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हुई है। जेएनयू में उसके बाद मतलब हुई है, तो वहां पे देखा जाए तो So जेएनयू से कंपैरेटिवली academics काफी बेहतर है। is, so we cannot say that. So let's say that academics at Delhi School of Economics and JNU is equivalent. Okay, it's very या difficult to say that yes, this is better in terms of academics or JNU is better in terms of economics. But then, okay, both are equal. So what else gives us a edge at JNU? What else? Then why JNU? Imran, यस सर। आपको JNU ज्यादा पसंद है या दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा पसंद है? सर जेएनयू ज्यादा पसंद Why? है सर, क्योंकि जेएनयू में जैसे फाइनेंशियल जो कमजोर है उनके लिए बेस्ट है जेएनयू। वहाँ पे हॉस्टल फीस वगैरह तो भी बहुत एक कम है एक जो एज हो कम्पेयर। जाता है, एवरीवन गेट्स अ हॉस्टल फैसिलिटी, राइट? यस सर। और जो कि दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है सर। हाँ, ठीक है। दूसरा क्या एज हो सकता है? दूसरा सर फीस भी अगर कंपैरिजन करें दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स से तो वहाँ पे बेटर है। मतलब वहाँ पे बहुत कम फीस देना पड़ता है जेएनयू में, 150 रुपये पर सेमेस्टर है आई थिंक। हम्म। Ankit, you'd like to say something? See, what we are trying to do today is clear the basic facts about the preparation, about the universities, about the colleges, so that from tomorrow, once we start preparation, we don't have to get into this kind of specifics. What is the other question that you like to ask? Anyone again? Okay. See, one of the advantage that JNU provides, which Delhi University doesn't provide, is in terms of closed campus. You know, the kind of interaction that you have at JNU, even though you are a MA student, you get to interact with PhD student, right? You get to interact with professors, because professors, being a residential campus, professors are also going to stay with you. There are a lot of, interdisciplinary meetings, conferences going on, which you can attend, which is lacking at Delhi University. Secondly, if you are preparing for UPSC, so there will be many students, many seniors who have, either appeared in an interview or something, which you get a chance to interact, which again Delhi University doesn't provide. So even you get a hostel at DU, so the kind of age that JNU provides is not available at DU. Okay, but in terms of academics, if you ask me, both Delhi University or DSC and JNU is the same. Yes, Sanjeev.
सर थोड़ा हिंदी में भी समझा दीजिए। देखिए क्या है ना कि जेएनयू में आप जब रहते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल, क्योंकि वो पूरा बोर्डिंग होता है, आप ना ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हो सकता है आपका रूममेट हिस्ट्री का स्टूडेंट हो सकता है इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो। अब आप भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो इसमें होता है क्या है कि वो ना आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ा देगा और आप उनको पूरा सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी होता है, वो ज्योग्राफी, वो सारा का ना इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। अब क्योंकि क्लोज्ड कैंपस है तो वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जहाँ के आप कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं। यू कैन टेक ए कोर्स इन हिस्ट्री, यू कैन टेक ए कोर्स इन ज्योग्राफी, एक सब्सिडरी पेपर्स के रूप में, विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। और ये सारी चीजें ना आपको डीएससी में अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा हो सकता है आपके रूममेट कोई पीएचडी के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपको बता देंगे कैसे पढ़ना है, क्या बुक पढ़ना है, तो वो सब आपको डीयू में अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इसलिए जेएनयू आपको एक एज प्रोवाइड करता है, इसलिए जेएनयू का ज्यादा बेनिफिट होता है। बट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, एनीवन हु इज ट्राइंग टू परस्यू पीएचडी, अगर आपको पीएचडी करना है तो जेएनयू भी उतना ही बेस्ट है जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अगर आपको हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है, जैसे 2023 में दो लड़कियां थी, उन्होंने जेएनयू भी क्रैक कर लिया, डीएससी भी क्रैक कर लिया, लेकिन दे वेंट अब्रॉड फॉर देयर पीएचडीज। तो वो एग्जाम टेजी की स्टूडेंट थी, उन्होंने बोला कि सर क्या करें पीएचडी के लिए, मतलब मास्टर्स के लिए बाहर चले जाएं या यहाँ से एमए करने के बाद फिर पीएचडी के लिए बाहर जाएं। तो वहाँ पे बाहर में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। अब ग्रेजुएशन यहाँ पे इंडिया में 3 साल का होता है, बाहर में क्या है कि यूएस में अगर आप जाइएगा तो 4 इयर्स, 4 साल, 4 साल का हो जाता है। तो आप मास्टर्स करने के बाद भी अगर आप चाहते हैं अब्रॉड फॉर योर पीएचडी, तो वहाँ आपको ना दोबारा मास्टर्स करना पड़ता है। सो हमने सजेस्ट किया कि नहीं, आप अभी ही चले जाइए, इट्स मच बेटर फॉर योर करियर ऑप्शंस एंड ऑल। सो दोनों चीज आपको जो है ना एडवांटेज के रूप में आप देख सकते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ हम लोग टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है। सो मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, सो 4 मंथ्स हम लोग जो है डेडिकेट करेंगे फॉर द प्रिपरेशन, एंड द प्रिपरेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ 3 stages. The first part will be your going through the previous papers, past papers. Okay. So you'll find that we have added past papers for not only CUET but also for other universities like JMI, Jamia Millia Islamia, SAU. Jamia Millia and SAU, they are going to conduct their own separate examination. But what I would suggest, अच्छा ठीक है, अब तो ये एडवांटेज नहीं रहा। What I would suggest कि आप इनके पेपर्स भी सॉल्व कीजिए। Reason being, you know, the difficulty level of questions which are being asked in Jamia is lower than that of CUET or let's say JNU. But then the advantage that you get is that there will be some questions which are of the same level that of, क्योंकि you know the 75 questions that we are looking for CUET are not of the same difficulty level. What you can expect is that out of this 75, let's say 25 will be difficult, okay, and we can say 20 will be moderate, and we can say that okay, 30 is going to be easy. So these 30 easy questions matches with the level of that of JMI. So solving past papers of JMI will give you an edge in solving these 30 easy questions of CUET. Is it okay? So that's why we provided a lot many number of previous papers like CVT, JMI, SAU. Will be adding papers of BHU, and we have added some of the papers of BHU. Will be adding more in your drive. Okay, we have not added of other universities, but then we'll be doing that also. So past papers solving is important. Now, question is, why do we need to solve or go through so many of the past papers? Looking at the past papers gives you an idea of how questions are being asked. Now, when we are talking about how questions are being asked, not only about the difficulty, but also the structure. Structure meaning like match the following,
or assertion region, statement type questions, multiple statements. So these are also the structures, the different type of questions which can be asked from a particular topic. So अगर हम लोग ये चीज पास्ट पेपर्स नहीं देखते हैं, सो वी कैनॉट गेट एन आइडिया लाइक अगर हम लोग कोई भी टॉपिक किंगशिप के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं फैमिलीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि फैमिली में जो है या मैरिज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है क्या एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. Okay, so this is something that by looking at the past papers we can get an idea. The second thing is in terms of scope of topics. Scope. Now Rahul said that some of the syllabus, some of the questions were out of syllabus. Okay. See, usually what happens is the syllabus which CUET provides, 80 to 85% questions will be asked from these topics, and there will be around, let's say, 10 to 15% questions which are out of syllabus. Now, out of syllabus, ऐसा नहीं है कि वो questions जानबूझ के पूछ रहे हैं. See, the difficulty with preparation of any syllabus is that all the topics cannot be covered. Okay, there are various subtopics. अब वो सब टॉपिक्स को आप अगर नहीं देखते हैं तो कवर अप नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, how many of you have looked at the syllabus part? So let me share the syllabus. So, okay, so before sharing the syllabus, so this is okay, why we do need to understand and why we need to go through the past papers. So past papers act as a guiding principle, like questions, how questions can be raised. The third important issue which the past papers solve is the relevance or the authenticity of the study material. Okay. Now, if you read a particular book, now issue with that book is that you can read the book, but none of the questions have been asked in the past. So, can we say that that book is relevant for the CUET entrance exam preparation? If we don't look at the past papers, we cannot say or we cannot, analyze whether the books or the study material or anything that we are referring is relevant for the examination. हम लोग एक book को ना 5 बार पढ़ सकते हैं. And this is something again that we have seen in the past. Like in this year examination, one of the student, excellent student, hardworking student, but he scored, I think, only around 87 or 88 marks out of 300. Okay, only 87. I don't know the exact marks. 87 or 88 marks. Now, the issue with this person was that he read more than 10 books. Okay, he never looked at the past papers. So he had no idea how the questions are being asked. He had no idea what can be the difficulty level from any of the particular topic that we are studying. He had no idea any of the books that we are referring is relevant for the examination or not. Why am I saying these things? Because none of the books that we have studied at the undergrad level has been prepared for the CUET examination. आपने कोई ऐसा बुक देखा है अंडरग्रेड लेवल में जो आपको पढ़ाया गया हो, जो सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया हो? यस आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है? Okay, so these are some of the difficulties. That's why we need to look at the past papers. So this is the first thing that we need to do. The second thing that we need to do is our preparation. So in terms of preparation, this means classes, study material. Okay. The reason why we are separately providing study material is that it's very difficult to go through, let's say, 10 book, and even though we go through 10 book, we don't know which chapters are important or which topic is important. We don't know how many pages of a particular book we are supposed to study. So the study material that we prepare will help you to pinpoint the exact requirement as per your CUET examination. Okay. The third is in terms of evaluation.
सो हम लोगों का लर्निंग होगी. So when we are preparing, this means we have learned everything. Now the next step comes in terms of evaluation to test our learning. Okay. The only way we can do this is through solving questions. So this is something that we are going to do in two different manner. One is your test series, and the test series that we are providing will be separate for CUET and a separate for JMI and separate for SAU. You know, one of the advantages of solving all the three different test series is that when we are solving for, let's say, JMI and SAU, जो 30 easy questions होते हैं ना, उसका preparation हो जाता है. We can prepare and we can come to know whether the easy questions that are being asked in the examinations can we solve them or not. CUT में mixed difficulty level रहेगी. You know, solving question paper will give you an idea whether your learning has been adequate as per the requirement of your CUT exam or not. This is again a mistake that many of the students have committed in the past. They have studied everything, they have looked at the papers, but they have not solved the papers. So, because the learning needs to be translated into outcomes. Just by learning, it doesn't matter. It needs to be translated, and outcomes means your result. सो रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ टेस्ट योर लर्निंग. If you are not able to solve any questions from a particular topic, so you have a timeline where you can go back to your learning and recheck and revise and do everything. So one is the test series, second is your mock papers, or so we'll be providing mock papers. See, test series will have independent questions, but the mock papers that we'll be providing, it will have new questions. Some of the questions from your test series, some of the questions from your past papers, some of the questions from your UGC net papers. So this will help you in understanding जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, कि आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि हो सकता है कि हम फर्स्ट टाइम में क्वेश्चंस जो है तुक्का लगा के भी सही हो सकता है, लेकिन क्या नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने गेस वर्क किया तो क्या 100% वो नेक्स्ट टाइम भी सॉल्व होगा? So what we are going to do is that we'll be cherry picking questions from multiple sources to prepare the mock test. Okay? So उसमें mixed up questions होंगे, past papers भी होंगे, and if you are not able to solve past papers at the last stage, this means your preparation has not been adequate. So एक चीज ना आप लोगों को ध्यान देनी है कि when we are preparing for the entrance examination, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, we are also preparing. अंतर बस इतना ही हो जाता है कि हम आपके साथ बैठ के एग्जाम नहीं देते हैं, but then आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है. इसलिए हम लोग अपने एंड से बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू डू द हार्ड वर्क. ठीक है. इसके बाद व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग इज like coming back to these structured type questions. So what we are also doing is that, you know, we will be providing you a PDF, एक सिंगल पीडीएफ जिसमें सारा मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जहां पे सारे चीज, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज दैट विल बी प्रोवाइडिंग, सो दैट दिस कैन हेल्प यू टू रिवाइज एंड क्विकली गो थ्रू, कि सिंपली क्वेश्चन देख के आपको उसके आंसर आना चाहिए. तो वो लास्ट स्टेज का प्रिपरेशन होगा. एक पीडीएफ होगा जिसमें सारे दुनिया जहां के सिर्फ एसेशन रीजन होंगे, एक जिसमें स्टेटमेंट टाइप होगा, एक जिसमें मैच द फॉलोइंग होगा. सो हर एक ढंग से हम लोग आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एंड द ओनली वर्क दैट यू हैव टू डू इज फॉलो दिस रूल्स एंड प्रिपेयर. सो ये 3 स्टेज में हम लोगों का पूरा काम चलेगा. एक पास्ट पेपर्स, दूसरा लर्निंग, थर्ड इज योर इवैल्यूएशन. और apart from the previous papers test series, we will be also providing you UGC net papers. And UGC net papers मैंने आपको इसीलिए दिया है क्योंकि again these are the UGC net papers which are being prepared by postgraduate professors, because this is an exam which is usually taken after completion of your MA or during the last semester of your MA.
So you might find some kind of resemblance in the terms of questions or the pattern of questions which are being asked in the UGC examination or your CUET examination. But then again, this is the last stage where you need to go through. Okay. So in terms of timeline, Fab is something where we are going to have our test series. March में examination and they have not declared the, but then they have said that the examination will be conducted after 11th of March. So we have 10 days. So this is a time period where every day we'll have mock test. Okay. So this is something that we have discussed for part B. So अभी तक any question that anyone has would you like to ask about any kind of clarification that you would like to seek? Yes, Sanjeev. सर जो फर्स्ट पेपर है सर फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन हम लोग बात ही नहीं किए हैं अभी तक। तो सेकंड पेपर की बात कर रहे थे, आप फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, व्हाट शुड बी द अप्रोच, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐड करना चाहेंगे? नो सर। ओके। क्वेश्चन था सर। सर मैंने जो क्वेश्चन देखा 2022 और 23 में सर, उसमें जैसे करंट सोशियोलॉजिकल जो इशू चल रहे हैं अभी इंडिया में, हमारी सोसाइटी में जो भी इशू चल रहे हैं करंट लेवल पे, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हाउ मेनी? तो उसको कैसे सर मैंने देखा था स्टैटिक को करंट से रिलेट करके क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। जैसे आएंगे क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे। अभी तो हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी को लेकर अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, कंचन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एनीवन ऑफ यू हु डिसएग्री विद द स्ट्रैटेजी कि नहीं सर ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। सर मेरा एक डाउट है। सर जैसे कि मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा नहीं है ग्रेजुएशन में, तो क्या ये पॉसिबल है कि 4 to 5 मंथ में तैयार हो सकते हैं? लोगों ने किया है। हाँ वही डाउट था। आप कर सकते हैं कि नहीं? देखिए देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए नहीं है सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, फिर भी लोगों ने क्रैक किया है, ठीक है। दूसरा, लोगों का सोशियोलॉजी बैकग्राउंड रहा है फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों चीज है। हार्डवर्क इज द मोस्ट। नहीं हम तो हार्डवर्क करेंगे, बस हमें ये जानना था। एनी क्वेश्चन? श्वेता, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay. So now let's move on to part A. So part A consists of 5 different subsections. Okay. First is your passage part. And this passage will have 5 questions. Second is your English. Okay. Again 5 questions. And English will consist of, let's say, एक antonym synonym पूछ लिया या one filling the blanks, items and phrases. Okay. Third is your quantitative aptitude. 5 questions. Quantitative aptitude meaning, like speed, distance, time, or they might ask about board problem. They might ask about profit loss questions. The fourth is your mental ability or reasoning. Okay. Again, 5 questions where they can ask both verbal and non-verbal question. And the fifth section is your GK or general awareness. Again, 5 questions. And what we have seen in this GK, and so one of the questions they have been asking in terms of current affairs. Okay, one question from history, one question from geography, one question from mostly like Indian polity, or you can talk about constitution. Okay, and sometimes they might ask also one question about environment or something like that. So this is the papers that we have seen. Now, what we have actually did was, for 2023 examination, the examination was conducted in 3 different shifts, and let's say for around I think
they started on 5th or 6th. Okay. So what we have done is that we have collected around 30 different sets of part A, because since they conducted the examination on different dates, so we tried to compile all the 30 different sets. Okay. So we have 30 different sets, so we can prepare and understand how the questions are being asked. Similarly, for 2022, we have 10 different sets. So if you combine these, there will be how many papers? So 40 past papers. Okay. Apart from these 40 past papers, we have prepared on the same pattern. We have prepared around 25 test papers or test series. Okay. Now coming to this section, like passage, so we'll be providing you a PDF with, let's say, 30 to 40 or 50 passages for practice. For English, what we have done is that we have, I think, prepared a PDF on 10 different topics with 100 questions each. For quantitative aptitude, we have prepared around 25 questions per topic on, let's say, I think around 10 different topics. Similarly, for reasoning part, what we have done is that we have prepared 10 PDF with 25 questions each on different topics. And similarly for general awareness and GK part. So one thing that you will get to know is that एक तो हम लोगों को past papers मिल जा रहा है. Okay. दूसरा, we are getting test series. Third, we are getting question bank और practice papers. So अब बताइए इतना करने के बाद पार्ट ए कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और क्लासेस सेपरेटली प्रोवाइड की जाएगी, या अभी भी पार्ट ए कंप्लीट नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा इनफ है सर। लेकिन करना पड़ेगा, है ना? So to ensure that you don't give enough time in terms of devotion from or deviation from B to part A, what we are planning is that we can conduct extra classes on Saturday or Sunday. ठीक है, so that side by side ना आपका पार्ट ए भी कंप्लीट होता चला जाए, and we are focusing on part A just for DU or university like SCU. Okay, just these two. ठीक है, Yes, sir. A is also important and we are expecting कि इसमें 100 अगर मार्क्स का है, so at least we should score 90 मार्क्स. ठीक है, अगर आपको 90 मार्क्स आपने पार्ट ए में स्कोर कर लिए ना, तो बिलीव मी यू विल गेट हॉस्टल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आल्सो. ठीक है. So we'll be providing extra classes on Saturdays and Sundays so that part A भी हम लोग का simultaneously cover up हो जाए. और क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये सारे जैसे English में we'll be providing 100 questions or antonym, synonym, atoms and phrases. So this is something that we need to learn also and go through and practice also. Okay. Quantitative aptitude is something like if we have a class on Saturday and Sunday, इसमें 2-3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सो आपके पास अराउंड 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वो 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेपरेटली हम आपको कंप्लीट सेट के प्रैक्टिस पेपर्स भी देंगे, विच एक सारा टॉपिक पॉइंट का कंप्लीट हो जाता है, तो यू कैन प्रैक्टिस दैट आल्सो. एंड रेगुलरली वी विल बी हैविंग क्लासेस, and what we are also planning is that to have extra class on Saturday and Sunday for part B. So apart from Monday to Friday that we are planning, so हम लोग पार्ट बी के लिए भी सैटरडे संडे को भी क्लासेस का प्लान कर रहे हैं. सो anyone having any issue with the classes on Saturday and Sunday? क्योंकि one thing that we have seen is वीक डेज में ना आप लोगों के कॉलेजेस होते हैं, और कॉलेजेस के कारण ना आप लोग उतना, मतलब हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि बच्चे स्टूडेंट ने उतना समय नहीं दे पाते हैं. We are seeing that in the political science also. You won't believe in political science, out of a batch of 50, hardly 10 students join, and when we call them and ask कि आप क्यों नहीं क्लास कर रहे हैं सर, कॉलेज से आते आते थक जाते हैं, ये है वो है. So we thought that the only way to take care of this issue is कि सैटरडे संडे को क्लासेस
थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस मान लीजिए 1 के बजे 1.5 घंटे की या 2 घंटे की हो जाएगी. सो एनीवन हैविंग एनी इशू विद दैट? नो नो सर, सर। ओके. नो सर। ठीक है. नो सर। सो अब बताइए पार्ट ए को लेकर किसी का कोई क्वेश्चन है? रोहित जी, राहुल जी, आपका क्वेश्चन आ रहा था. यस, नेगेटिव मार्किंग होगी. नेगेटिव मार्किंग इज -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. एक क्वेश्चन था, वन क्वेश्चन सर। सर, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो पार्ट बी के लिए अलग होती है, पार्ट ए के लिए अलग होती है? यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट जेएनयू, तो जेएनयू नेगेटिव मार्किंग पार्ट बी का ही सिर्फ कैलकुलेट करता है. बट देन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिंस दे आर कंसीडरिंग योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 400, so they will take negative marking for both part A and part B. ओके सर। Any more questions, संजीव? सर जो हिंदी मीडियम वालों के लिए पैसेज और इंग्लिश में जो सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे उसकी जगह पे क्या होगा? हिंदी मीडियम में भी पैसेज आते हैं, और हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम है उसके बदले वहां पे ना संज्ञा, सर्वनाम, व्यंजन, इन सब से सवाल आते हैं. तो सेम चीज जो आपको हिंदी, जो हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के लिए किया है, वो सेम चीज हम लोग हिंदी मीडियम के लिए भी करेंगे. ठीक है. अंतर यस बस उसमें ना आपको सेपरेट पास्ट पेपर्स मिलेगा, बिकॉज द पास्ट पेपर्स, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट ए फॉर हिंदी मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम पार्ट बी हिंदी मीडियम. सॉरी, पार्ट ए हिंदी मीडियम, दोनों का इंग्लिश हिंदी हिंदी का दोनों का ना अलग अलग क्वेश्चन है. ठीक है. आपका जीके का क्वेश्चन यस सर। सेम, क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन सेम है, रीजनिंग का क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इंग्लिश और पैसेज का अलग है. तो इसीलिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर भी जो प्रिपरेशन की है टेस्ट सीरीज के रूप में, वो उसी पैटर्न पे किया. पास्ट पेपर्स भी सारा आपको हिंदी में मिलेगा. अंतर बस इतना ही है कि जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन बैंक हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो शायद हिंदी में ना प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि हिंदी में ना उस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंटोनिम, सिनोनिम या एडम्स एंड फ्रेसेस नहीं पूछे जाते हैं. तो फिर वहां लर्न करने की कोई चीज रह नहीं जाती, गुंजाइश. ठीक है. यस सर, थैंक्स। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। Now next thing is coming to the question now. So what we are going to do is that tomorrow we'll be adding, see, Sociology 2023 examination was conducted on 2 different dates, first on June and second on 30th of September. June. Okay, so we'll be adding both the papers in your drive probably before 12 before 12 p.m. I'll let you know once I add in the drive. I've already added the past papers for 2021. I think I have added from 2019 or 18. CUET 19, ठीक है. सर 2019। हाँ, सो आपको ना एक काम करना है. दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डू. जो 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है, आप जो है आज क्लास के बाद ना वेटेज इसका देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. टॉपिक, क्वेश्चंस. Okay. This is something that we have also done and will be sharing also. लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है. ठीक है. सेम थिंग दैट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर 2023 आल्सो. सो वंस वी ऐड द पेपर, आपको ना ये सेम चीज, टॉपिक एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव डू इज टू कंपेयर. इससे क्या होगा कि वेटेज आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है. क्लियर है? टॉपिक से वेटेज इंपॉर्टेंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार होता है, वी ट्राई टू डिवोट मोर टाइम ऑन दोज टॉपिक्स दैट वी लाइक, जो हमें अच्छा लगता है. लेकिन अगर उससे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, फिर फायदा क्या है उसको उतना पढ़ने का. ठीक है. तो इससे आपका एक तो वेटेज क्लियर हो जाता है. दूसरा, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव आल्सो डन इज टू कंपेयर वेटेज विद डिफिकल्टी लेवल. So we have identified those topics where weightage is higher, difficulty level is lower, so that we can, ये ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जिसको कि 100% हमें इसको मार्क्स फेच करना है.
फॉर एग्जाम्पल रिसर्च मेथोलॉजी से अगर 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन इजी टाइप है, तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिएगा या बाद में सॉल्व कीजिएगा? इस टॉपिक को आप ज्यादा अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि कम पढ़िएगा? ज्यादा पढ़ेंगे सर। हाँ, लेकिन यही रिसर्च मेथोलॉजी से मान लीजिए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल इज हाई, सो ये क्वेश्चन, इस टॉपिक को पहले प्रेफरेंस में रखना है या लास्ट में रखना है? लास्ट क्वेश्चन का। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई सबके मन में? यस सर। ओके, सो एंड दिस इज समथिंग कि आप अपने एंड से पहले कीजिए, तब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय राहुल। उन्होंने बोला कि करंट अफेयर या कॉन्टेम्परेरी जो इश्यूज चल रहे हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि माय क्वेश्चन वाज हाउ मेनी क्वेश्चंस। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर कंटेम्परेरी से मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन आ गया, तो इस कंटेम्परेरी का ना कोई सिलेबस नहीं है। This is something that we see, like a question can be asked in terms of the women reservation bill which have been introduced, right? So ये तो आपको पता ही होगा ना कि करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही है उस पे हम लोग को ध्यान देना है। ओके, सो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर जो है ना अब यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और कल एक बार जो है फिर हम लोग ना क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा